ओके इस गेम में हम दो चीज़ें और ऐड करने लगे हैं। एक तो हम जब एनिमी मेरे थोड़ा डिस्टेंस पे करीब आ जाए तो देयर शुड बी अ शाउटिंग साउंड, वाह, इट गिव्स यू अ फील कि यार कोई एनिमी करीब है। फॉर एग्जांपल मैंने एक साउंड कहीं से डाउनलोड की है, दिस इज अ मैन स्क्रीम 01, this is the kind of sound you'll hear once an enemy is close by. उसका तरीका हम ये कर सकते हैं कि हम कहीं स्क्रिप्ट में कोड लिख देते हैं कि if the distance between the enemy and the player is too less, so हमें करना होगा कि हम अपने एनिमी के अंदर एक कोड लिख दें, या एनिमी के अंदर हम कोड लिख दें और वो चेक करें कि हम कितना दूर है। सो आई नीड टू गो बैक टू योर एनिमी एंड सेट दैट अ लिटिल अप। सो माई प्री फैब्स में ये आपकी एनिमी है और इस एनिमी में कोई यू कैन सी कि इस एनिमी के अंदर कोई ऑडियो सोर्स नहीं है, तो हम इस एनिमी के अंदर ऐड ऑडियो सोर्स कर देते हैं और इस ऑडियो सोर्स के अंदर हम इसकी स्क्रीम ऐड कर देते हैं। ये रही मैन स्क्रीम, लेकिन गेम चलते ही हम इसको चीख की आवाज़ नहीं निकालना चाहते, हम चाहते हैं कि ये जब हमारे करीब आए तो ये आवाज़ निकले। नेक्स्ट काम मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं एक स्क्रिप्ट भी ऐड करना चाहता हूँ इसमें, थर्ड पर्सन कंट्रोलर ऐड, इसका नाम हम रखेंगे एनिमी स्क्रिप्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी योर न्यू स्क्रिप्ट, एनिमी स्क्रिप्ट। और इस एनिमी स्क्रिप्ट में हम प्लेयर का रेफरेंस ले लेंगे। हमारा जो मेन प्लेयर है उसका नाम मेरा ख्याल है फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर है। सो इफ आई गो बैक एंड चेक कि हमारे प्लेयर का नाम है FPS कंट्रोलर, तो हम यहाँ पे एक गेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम होगा प्लेयर, और इस प्लेयर को हम कोड से इनिशियलाइज कराएंगे क्योंकि ये प्री फैब के अंदर कोड है। सो प्लेयर इज इक्वल टू गेम ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड और इसका नाम है FPS कंट्रोलर। ओके, ये प्लेयर हमारे पास आ गया। अब हम ये चेक करते रहेंगे इफ वेक्टर 3 डॉट डिस्टेंस बिटवीन me, which is the enemy, transform dot position and player dot transform dot position. So मेरी पोजीशन और प्लेयर की पोजीशन में अगर जैसे ही less than 2 is sufficient, it should say get component audio source डॉट प्ले। ये 2 का डिस्टेंस हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 2 का डिस्टेंस काफ़ी है, क्योंकि बिल्कुल जब करीब आ जाए तो इट शुड स्क्रीम, और जैसे ही स्क्रीम की आवाज़ आए हाँ एंड किल्ड एंड गेम ओवर एंड ऑल दैट। सो देखना ये है कि अगर ये मेरा FPS कंट्रोलर है और एनिमी मैं एक खुद बना लेता हूँ माई प्रीफैब। सो माई FPS कंट्रोलर इज एट 0 0 0 और मेरी एनिमी अगर इतना करीब है तो इसकी पोजीशन होगी X पोजीशन, या 2 इज प्रिटी क्लोज। हाँ, अगर मैं X इसका 0 रख लूँ लेकिन Z इसका 2 कर दूँ तो यू विल सी के ये काफ़ी करीब है 2 पे। इसको हम 3 भी कर सकते हैं, सो वी कैन चेंज इट टू 3 here. I save this. I also make sure that the code is added here and then I delete the extra enemy जो मैंने ऐसे ही बनाई थी। अब देखते हैं कि enemy जब आती है तो मुझे टकराने से पहले चीख की आवाज़ आती है कि नहीं। Do we have an enemy coming in? There you are. Oh, there was no sound. What happened? Was it too early? Was there no collision? Actually, I can double check with the अब उसमें हो ये रहा होगा कि वो बार बार उसको प्ले करने की कोशिश कर रहा होगा क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्टेंस इज लेस देन 3। तो हमें कोई ऐसा तरीका करना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक दफ़ा प्ले हो। फिर चला के देखते हैं। एनिमी वेयर आर यू? हेलो एनिमी, कम हियर। So it does play the scream. It does say it is trying to play the scream, but that scream is being played so many times. It tried to play it 66 times.
So I don't want that happening. So उसके लिए हम कोई कोड में ही ट्रिक लगा लेते हैं छोटी सी. I could probably make a boolean. Boolean is a variable which is true or false. Boolean screaming. By default screaming is equal to false. जैसे ही आपका डिस्टेंस कम होगा आप इस स्क्रीमिंग को ट्रू कर देंगे और फिर you could probably play the sound. लेकिन इसमें आप कोशिश ये करेंगे कि if the distance is less than 3 and screaming is equal to false. So अगर screaming false है तब आप उसको true करें और play करें. अगर false नहीं है तो वो फिर इसमें नहीं आना चाहिए. So hopefully अब हमारी चीख की आवाज़ भी इसमें आनी चाहिए. Oh, we have a I'm sure that is fine. Yeah, you heard the sound. But it was a little too late, so maybe we can improve on that कि हम इसका distance जो है वो 3 की बजाय ज़्यादा कर देते हैं, less than 6 कर देते हैं. Let's try it now again. क्योंकि वो screen भी थोड़ा silence के बाद शुरू होती है तो hello enemy, do we have anyone? Yeah, please. Yeah, so it has to be even larger than 6. I will make it 9 or 10 so that we hear the whole scream before this. Yeah, come on. That is good. That is good. Also, I find myself a little too handicapped in the dark. So मैं अपनी gun के अंदर probably I can create game object, light, and I will create a light which is a directional point light, sorry, spotlight. इस spotlight की direction मेरे पैरों की तरफ नहीं होनी चाहिए. It should be in the direction of the gun, like that. No, can I turn it to 0? Yeah. So this is the light. इस light को भी मैं AK-47 का चाइल्ड बना लेता हूँ और उसकी पोजीशन हम 0 कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द गन. सो अपेरेंटली ये हमारी स्पॉटलाइट है जो इसको चला के देखते हैं. वैसे दूर नहीं दिखा रही होगी लेकिन जब नीचे करेंगे तो ज़मीन पे ये लाइट पड़ रही होगी तो यू कुड दैट स्केयर्ड मी. हमें चाहिए कि हम ये स्पॉटलाइट की थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, एक्चुअली रेंज बढ़ा देते हैं to let's say 15 and intensity भी चाहे हम थोड़ी सी बढ़ा दें. अब जब हम इसको देखेंगे तो it's going to be pretty decent light. ये आप दरख्तों पे मार सकते हैं आप. Oh. So now this is my complete game that we were about to make in this section. आई होप कि ये मज़ेदार सेक्शन रहा होगा. आपकी मर्ज़ी, आप दिन का सीन बनाएं, शाम का बनाएं, रात का बनाएं, बट आई थिंक रात का सीन थोड़ा ज़्यादा स्केरी है. बहुत जल्द लेस देन एन आवर में हमने ये गेम बनाई है. ज़ाहिर है इस पर जब आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो इससे अच्छा सीन बना पाएंगे. सो दैट्स ऑल विद आवर फर्स्ट पर्सन शूटर सेक्शन ऑफ द गेम.